यूपीएससी की बात है, ये लोग यंग जनरेशन जो है 4-5 साल लगा देती है, तो क्या आप बताना चाहेंगे ये यूपीएससी वर्थ इट है कहना? For prelims, what I believe is you have to do many number of mocks. So I'm from Telangana, and the questions are based on the Telangana current affairs. And I believe coaching is not compulsory, but it gives you direction. So if you are directionless, you must take coaching. For polity, we have Lakshmikant. For modern history, we have Spectrum. For art and culture, we have Nitin Singhania. And for CSAT, मैम आपका नाम? Your name? I'm Srinidhi. तो मैम कैसा गया आपका? कांग्रेचुलेसन, आप इंटरव्यू तक पहुंचे इतना एक्सपीरियंस करने के बाद, तो कैसा गया इंटरव्यू आपका? Thank you. Interview went very well, and I got BB Swain sir board, so it went very well, and the cordial board it was, and most of the questions went from my DAF itself. Yeah. मैम आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या था? I have done my bachelor's of arts, so it was BA in economics, history, and public administration. अच्छा मैम, कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? This is my third attempt, and first mains and first interview. मैम ये जो एक्चुअली यूपीएससी की बात है, ये लोग यंग जनरेशन जो है 4-5 साल लगा देती है, तो क्या आप बताना चाहेंगे ये यूपीएससी वर्थ इट है कहना? Of course, it is worth it, because that is the reason many people are coming here. So it is worth it, but you must have also plan B. But you have to do hard work in order to achieve that. मैम क्योंकि आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए दिक्कत ये होती है कि उनके लिए प्लान बी नहीं होता है, तो उस प्लान बी के लिए आपका क्या था मैम प्लान बी? My plan B was to do PCS. So and also I'm also interested in teaching. So these two are my plan. मैम ये स्ट्रेटेजी क्या है? जैसे प्रीलिम्स में ही कई बच्चे हो जाते हैं, और चूंकि आर्ट्स के बच्चों के लिए सीसेट बहुत बड़ा दिक्कत करता है, तो वो उसका क्या स्ट्रेटेजी रहेगी मैम प्रीलिम्स के लिए? For prelims, what I believe is you have to do many number of mocks. So this will help you in reducing your number of negatives and increase your accuracy. So many number of mocks will help you, and also doing previous year questions. This will help in UPSC type of questions, so that you can easily reduce your negatives. हम चूंकि सीसेट में मैथ्स के भी ज्यादा अमाउंट में क्वेश्चंस आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग आता है, तो उसके लिए आपने क्या किया था? Practice. That is the only thing. Practice. मैम कोई कोचिंग का भी आपने सहारा लिया? I have watched for CSAT. I have watched CP classes videos. So the sir had comprehensively talked regarding the questions. So I have watched them. मैम मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी रही? क्या मतलब राइटिंग ज्यादा इम्प्रूवमेंट लानी पड़ती है उसके लिए थोड़ा सा? So for this also you have to do number of mocks. I have taken the test series from NCERT IAS. So they have given me very good feedback. I had worked upon them. So through that I was able to sail through the mains as well. मैम एक चीज और, ये अभी TVF एस्पिरेंट्स आया था, 12th फेल मूवी आई थी, ये चूंकि क्या ये जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जो जर्नी होती है, क्या उससे इनका रिलेशन होता है, या वो ज्यादा एग्जैजरेट करके बढ़ा चला के बताते? It is maybe to some extent, yes, there is an exaggeration, but the hard work and persistency, that is there, sir. So yeah. आपने 12th फेल देखी है मैम? हाँ, मैं देखी. कैसी लगी आपको? It was heartwarming, and since it is real, so it felt very good and nostalgic as well. अच्छा मैम, ये जो यूपीएससी के जो मॉक इंटरव्यू होते हैं, आपने दिए थे मॉक इंटरव्यू? हाँ, मैं दिए. क्या मॉक इंटरव्यू और जो रियल में इंटरव्यू होता है उसमें कुछ डिफरेंस है, या अलग अलग है दोनों? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है. ये तो बहुत कॉर्डियल है बोर्ड, बट मॉक इंटरव्यूज there is a kind of boundary that they create, and there is a much of informality that is present there. But here it is very different. So this is a very different ball game altogether. मैम ये कैसे क्वेश्चंस आए थे यूपीएससी इंटरव्यू में? स्टैटिक से ज्यादा आया था, आपके डेप्थ से ज्यादा, या करंट अफेयर्स? My interview went in my DAF itself. So I'm from Telangana, and the questions are based on the Telangana current affairs and Telangana schemes the government has introduced. So yeah, DAF and current affairs. मैम ये जो अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आए हैं कई यूनिवर्सिटीज में, जो उनमें बहुत चार्म होता है यूपीएससी प्रिपरेशन करने के लिए, तो उनके लिए क्या एक सही सोर्सेस हो सकते हैं पढ़ने के लिए? कोचिंग इम्पोर्टेंट है कि नहीं, तो उस पर मैम थोड़ा गाइडेंस अगर हो जाती? I believe coaching is not compulsory, but it gives you direction.
So if you are directionless, you must take coaching. If not, then you can study at home as well. Because I have taken coaching, but most of my preparation went in my home itself. So it depends on you and your own strategy. हम सेल्फ स्टडी करने में दिक्कत ये होती है कि हम, क्योंकि कई सारे सोर्सेस हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा लक्ष्मीकांत पॉल कई सोर्सेस हैं, तो उनके लिए क्या सही सोर्सेस हो सकते हैं, उस पर थोड़ा सा गाइड मिल जाती है. Sources, like everyone knows it. For polity we have Lakshmikant, for modern history we have Spectrum, for art and culture we have Nitin Singhania, and for CSAT I had followed Arihan series. So basic sources, everyone knows it. Yeah, only the thing is you have to study and do hard work. मैम आपका डेली शेड्यूल क्या था प्रिपरेशन टाइम में? टॉपर्स कहते हैं कि हम 12 घंटा पढ़े, 18 घंटा पढ़े, क्या वो सच है? मतलब कैसे बताती हैं आप उसको? Yeah, we actually require at least 10 hours of study. I do not tell that we do not require to study for many numbers, but you have to study minimum 10 hours. It is required. But studying for 16 hours is, I do not think, a realistic study. Your quality reduces if you study that many number of time, like hours. So yeah, they exaggerate it, but 10 hours is decent enough, I believe. मैम जैसे कि अगर जो बच्चे हैं 2026 के लिए, तो 26 के लिए क्या करंट अफेयर्स अभी से तैयार करना स्टार्ट कर देना चाहिए या उसके लिए एक साल का आगे का 2025 से पढ़ना चाहिए? For 26, I believe you have to do your basics first rather than cramming over current affairs. So basics needs to be clear now, like studying for NCERT, studying standard books. That will help you. And for current affairs, you can start from 2025. So that you will be able to easily understand the current affairs of 2026 because they are continuous, right? मैम ऑप्शनल क्या था आपका? मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था. सोशियोलॉजी था. मैम एक चीज और पूछना चाहूंगा, क्योंकि मेंस में जो होता है कि प्रीलिम्स के लिए जो बच्चे पढ़ते हैं वो मेंस के लिए थोड़ा सा भटक जाते हैं, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि मेंस में नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो नोट्स मेकिंग के लिए क्या आपकी रही है? So for mains, you have to parallelly study along with prelims. So when you are studying for prelims, you will actually start in in February. But before that, you are doing only mains. So for that, the note making is very crucial. And there are many internet sources. So from there, we can make our notes. And I preferred making digital notes. So this one helped me. मैम एक चीज और है कि प्रीलिम्स अभी 3 महीने बचा है, तो जो अभी प्रीलिम्स देने वाले हैं उनके लिए क्या आप बता सकती हैं, क्या हेल्पफुल हो सकता है उनके लिए? For prelims, I believe you have to complete your PT 365, which is I believe it is basic. You have to clear for prelims, and secondly, you have to be thorough with the previous year questions. I started doing previous year from 1990s questions also, from there to 2022. So previous year questions and going thorough with the PT 365 and other basic standard text helps you. मैम एक चीज़ और, जैसे अगर कोई बच्चा आता है 2026 का देता है या अभी 27 में देगा, तो उसके लिए कोचिंग क्या, मतलब वो प्रीलिम्स के 5 महीने पहले वो कोचिंग अपनी कर ले, या कई होते हैं कि वो प्रीलिम्स के 2 महीने तक पहले 2-3 महीने तक वो अपना कोचिंग करते रहते हैं, तो क्या इसमें आपकी क्या राय है? For coaching, as I said, it is not hard and fast rule that you have to take coaching. But if you want to take coaching, you have to take it parallelly with mains and prelims. That is, I do not think taking only exclusively for prelims will be beneficial for you. But because ultimately you have to also clear for mains, right? So from mains only you have to start doing coaching. मैम प्रेफरेंसेस क्या रही हैं आपकी? It is IAS, IPS and IFS. बहुत बहुत बधाई मैम, उम्मीद करते हैं कि आप IAS बने. थैंक यू मैम. Thank you.